Welcome to another very amazing and informative session on Shiksha. This is Bhagyashree, your moderator for this session today. And of course, we all know the topic for this session where you have registered is all about IBPS PO banking exams. So we'll be talking about English, particularly for this session, because we'll be having two more sessions for reasoning and maths in the upcoming weeks with 4D Education Hub. So I will be sharing those links where you can register today itself, start registering for those webinars also. Okay. And let me first welcome our eminent panelists today. We have Shreyas sir from 4D Education Hub, director from 4D Education Hub, will be taking up this session for English. He has been part of our Shiksha webinars, and I think some of you might recognize him. He's there on social media, LinkedIn, everywhere. And I think some of you might be, taking up sessions with his institute as well. So let's welcome Shreyas sir. So thank you so much for being with us again on our platform. Thank you, Bhagyashree, and special thanks to Shiksha for inviting me on this platform. So it's a really great honor to discuss these things with our students, because it is one of the most esteemed examinations for whole year, and specifically for the students belonging to each and every background. Previously it was like that कि भाई engineering students while they are appearing for banking exams, commerce वालों के लिए banking छोड़ दीजिए, banking exams छोड़ दीजिए, but now it's a level playing field for all of us. Either the student is from arts background, commerce background, or engineering background. And last 2 years we have seen that कि जो vacancies थी थोड़ी सी कम थी, but this year it's really a good number. It's a huge number, and everyone should note that. I would suggest you कि भाई 7,000, it's approximately 6,932 something. So just stay calm, just stay focused, because 3 to 4 banks right now they haven't shared their number of vacancies, number of seats, right? Because they have mentioned not reported. So there are chances ki there will be an increase of 1,000 to 1,500 vacancies in the coming time. We can see. Yeah. So I guess now we'll start with the session. Yeah. Over to you, Bhagyashree. Yeah. Absolutely, sir. Absolutely. So, students, I've already shared the link that we have on Shiksha, where all the upcoming notifications regarding the exams, prelims and mains, the syllabus and the questions, there are a lot of things that you will find on these pages. So I would request all of you to just go through these pages and, be aware and notified of all the discussions that we are doing. Also, sir, we have registered on the registration sheet link that I've shared. We have received a lot of queries from our students, so we'll definitely try and pick up those queries itself. So when we talk about IBPS, it is like considered as one of the most awaited exams, and it's held every year for recruitment of probationary officer or management trainee in public sector banks. Sir, I would like to start off like when we talk about it is one of the most awaited. So why it is considered to be like one of the most awaited? Like Sarkari exams, banking exams is huge, and a lot of people around us in our family, there are a lot of students who appear and sit and yeah, they doing well. So why it is so important and why it is one of the most awaited one? One of the prime factors I would say ki, like, these exams are conducted by the body IBPS, right? Whenever we go through all the other exams, whether you go for SSC, you go for railways or any other government exams, this is the only exam that is conducted regularly without any problem, without any issue, without any dispute. All of their vacancies, they come timely. The exams are conducted regularly, and vacancies are released regularly. So, and apart from that, yeah, and apart from railways, banking industry is one of the biggest recruiters of our country. So that is the biggest factor that students are very much into these exams, right? Because if you go through all the major bank exams, whether we see SBI or RRB or RBI or IBPS or insurance sector, this is the area which mostly recruit approximately 40,000 to 50,000 students a year. So it's definitely a huge number for all of them. All right, I think yes, that very well answers. I think some of them wanted to know that why this exam is so important, and I think some of them will be preparing and gearing up to sit for this exams. They have time, so I think that would be a great answer to that question. Okay, so guys, I would request some of you, I'm sure a lot of you are attending this webinars because you're planning to sit for the exam, take up this exam, and I'm sure that you might be having a lot of queries, right?
So I would request start sharing your queries. Yes, we will be talking about the preparation. Thank you for all your queries that I could see coming up here. So let's just come and start off with English when we're talking about, especially for English. Sir, how important is English? We know that in India, in our country, in so many competitive national level exams, English holds really strong values, in terms of scoring and in terms of communication, bagging a job. So for this particular banking exams, how much importance English holds, particularly this subject holds for the students? Students को let me tell you one thing that first of all everyone कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वी मस्ट नो कि कोई भी चीज करने का रीजन क्या होता है राइट देन ओनली यू विल गेट टू नो कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है many of the students say कि सर बैंकिंग एग्जाम्स में इतना डीआई देने का क्या पॉइंट होता है मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन देने का क्या पॉइंट होता है रीजनिंग में इतने सारे हेवी पजल्स देने की क्या जरूरत होती है इंग्लिश में इतने बड़े बड़े ड्राफ्ट्स इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स देने की जरूरत क्या होती है तो ये सारी जो जरूरतें हैं यू विल गेट टू नो व्हेन यू एंटर इनटू दैट फील्ड व्हेन यू गेट लॉट ऑफ फिगर्स तब आपने जो डेटा इंटरप्रिटेशन में जिस तरह के टेक्निक्स जिस तरह के ट्रिक्स आपने सीखे हुए हैं that you will be able to implement in your work field, right? Same goes with the concept of reasoning. Now, English में English important इसलिए because most of you आप इस sector में जाने के बाद you will get every day you'll get some new regulars and कुछ ना कुछ official notifications you will get it, right? So in order to be updated, चीजों से अपडेटेड रहना कोई नई पॉलिसी से अपडेटेड रहना इन सभी चीजों के साथ टू रिमेन अपडेटेड आपको अच्छी इंग्लिश आई वुडंट से कि भाई इंग्लिश में अच्छी इंग्लिश का मतलब बहुत अच्छी वोकैबुलरी या बहुत अच्छा ग्रामर होता है नो प्रैक्टिकल इंग्लिश यू मस्ट बी नोइंग द प्रैक्टिकल इंग्लिश डेली जो यूसेजेस होते हैं नेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल अफेयर्स इकोनॉमी बैंकिंग इंडस्ट्री कैसी परफॉर्म कर रही है क्यों ऐसा परफॉर्म कर रही है आने वाला टाइम क्या हो सकता है सो ये सारी चीजों के साथ अगर आपको अवेयर रहना है तो यू शुड बी वेरी मच इनटू इंग्लिश एंड डेली रेगुलर रीडिंग हैबिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो यही चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में रिफ्लेक्ट करता है सो इन क्वेश्चन पेपर्स shall I go to the pattern of the exam right so every one of you must be knowing in prelims you get 30 questions 20 minutes and in mains you'll get 35 questions 40 minutes. So that gap you can see in prelims you'll get 20 minutes to solve 30 questions. But in mains you'll get double of your time 40 minutes and you have to just solve 35 questions. The point is pre and mains में ये difference होता है कि in mains you'll get maximum reading based questions. ठीक है? And many of you you'll observe कि आपके जो peers जिनका regular reading habit होता है वो definitely outperform करते हैं अपने बाकी friends से. The reason is सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलर रीडिंग आप जो भी चीजें रीड कर रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट योर कॉम्प्रिहेंशन ऑल अबाउट योर रीडिंग स्पीड राइट तो जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं जो भी चीजों को आप रीड कर रहे हैं रेगुलरली नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज बैंकिंग न्यूज वही सारी चीजें यू विल गेट इन योर एग्जाम्स ठीक है एंड इंग्लिश को जितना लोग टफ सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ यही है कि सर मैथ्स एंड रीजनिंग में हम दिन भर मेहनत करते हैं वी यूज्ड टू गिव 6 to 8 hours फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग बट नॉट अ सिंगल स्टूडेंट मुझे मिलता है कि जो बोलता है कि सर आई रेगुलरली स्टडी इंग्लिश आई रेगुलरली गिव एटलीस्ट 1 to 1.5 hours फॉर इंग्लिश दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक दैट स्टूडेंट्स डोंट फॉलो ठीक है तो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज बट यू नीड टू प्रैक्टिस दैट लैंग्वेज राइट तो प्री एंड मेंस में जो डिफरेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रिपरेशन प्रीलिम्स के अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होती इट्स अ मिथ मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स से कि सर पहले प्री तो निकल जाए देन मैं मेंस की तैयारी करूंगा तो प्री में दिल जस्ट गो थ्रू द ग्रामर जस्ट वोकैबुलरी एंड रीडिंग पार्ट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स की कोई प्रिपरेशन नहीं होती आप एक चीज सोच करके देखिए इफ यू क्लियर प्रीलिम्स यू वोंट गेट अ सर्टिफिकेट कि हाँ भाई मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है राइट आप मेंस क्लियर करते हैं तभी आपको जॉब मिलती है सो प्रीलिम्स के अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं होती फ्रॉम द डे वन ऑनवर्ड स्टूडेंट मस्ट बी फोकसिंग अकॉर्डिंग टू द मेंस एग्जामिनेशन राइट ठीक है फाइन सो एनीथिंग या All right. Okay. So
We are getting some questions about English strategy. What should be English strategy? And also Darshan is asking like how to prepare for IBPS mains. Probably he's sitting for the mains. So how can they start preparing for that? Also Aditya is saying sir मैं daily reading कर रहा हूँ तभी मेरे 4 to 6 marks आते हैं. Okay. Okay. So I think we can address to these problems. All right. Guys, देखो, first of all we need to know कि भाई इंग्लिश का पैटर्न कैसा आ रहा है, right? Prelims में अगर कट ऑफ, now IBPS is the exam you go through, you have to clear sectional as well as overall cut off, right? तो अगर मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ की बात करूं, it was approximately 50.5 for UR कैटेगरी. हम उसी के बेंचमार्क के हिसाब से बात करेंगे. So UR कैटेगरी में इंग्लिश की कट ऑफ थी 10, but merely scoring 10 you won't be able to crack prelims, right? And prelims में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको ध्यान में रखनी, स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे वेबसाइट्स चेक करते हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ 20 to 23 इज द गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. तो हमको ये प्रिजम्पशन लेकर के नहीं चलना है कि हाँ भाई एटलीस्ट मैं 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊंगा. गाइस, इट कैन गो बोथ वेज. अगर पेपर टफ आ गया आपके शिफ्ट में और अगर आपने प्रिज्यूम करके रखा हुआ है कि मुझे 25 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वहां पर आप गलती करोगे. और अगर पेपर इजी आ गया, स्टिल आपने प्रिज्यूम करके रखा हुआ है कि मुझे 24-25 अटेम्प्ट करना है, बाकी लोगों ने आपसे ज्यादा अटेम्प्ट किया हुआ, आप कहीं ना कहीं कम स्कोर करोगे. सो द पॉइंट इज कि सबसे पहले वी मस्ट नो द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. Prelims, you'll get all the three sections: reading, grammar, vocabulary. But when you go to mains, वहां पर maximum more than 70% questions will be based on reading. ठीक है. अब prelims की अगर मैं बात करूं तो reading comprehension, close passage, parajumbles, sentence arrangement, sentence completion, sentence correction, error detection, vocabulary, यही major types of questions आपको prelims में आते हैं, right? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो प्री का होता है काफी सिंपल लेवल का होता है. you'll get a passage and passage को पढ़ के you have to solve 8 to 10 questions. Got it? तो ये 8 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको सिर्फ एक ही पैराग्राफ रीड करना है यहाँ पे. एंड गाइस, एक चीज और you'll observe कि जो टॉपिक के बारे में आपको पता है उस टॉपिक को आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो एज कंपेयर टू दोस टॉपिक्स जिसके बारे में आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो. अगेन दिस आई लिंक इट टू योर रीडिंग हैबिट. एक चीज आप लोग सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, जिन एग्जाम्स में आप लोग सभी बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह देते होंगे, जहां कहीं भी you'll get the passage related to COVID-19 पैंडेमिक, आप सब बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म करते हो, बहुत अच्छे से उसमें अटेम्प्ट्स करते हो. लेकिन whenever you get the questions, the passages related to national issues, international issues, global economy, Indian economy, Asian economy, यहाँ पे फिर हमारे अटेम्प्ट्स, हमारा कॉम्प्रिहेंशन, हमारा रीडिंग स्पीड सब कुछ नीचे की तरफ आता है. And the biggest reason for that is we are not very much used to these types of topics. So I would suggest कि from starting onwards, you should be in the habit of reading at least half an hour, 45 minutes. And banking aspirants के लिए especially I say कि भाई go through the economy related articles. Then grammar and vocabulary. देखिए vocabs बहुत तरीके से बच्चे prepare करते हैं. Like many of the websites they provide you with Hindu vocabs list, बहुत सारे होते हैं. But वही vocab एग्जाम में आना जरूरी नहीं, right? बेटर ये होगा कि जब आप रीडिंग कर रहे हो, the type of words you get, जैसे मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ, definitely it will help you. Like मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा हूँ, I'll set the time limit कि हाँ भाई आर्टिकल 1000 words 1500 words का दिख रहा है, I'll try to complete it in 5 to 7 minutes. And वहां पे बहुत सारे words ऐसे होंगे जिसके बारे में मुझे मीनिंग नहीं पता है, तो I'll skip that word. I'll try to know कि भाई ये वर्ड के आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से I'll understand that sentence. ठीक है. आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद फिर मैं उस वर्ड को चेक करूंगा. देन मैंने क्या किया, वो वर्ड्स जो मुझे समझ में नहीं आते थे उसका मैंने वेब बनाना चालू किया. लाइक दिस XYZ वर्ड मुझे मिला, इसका मीनिंग मैंने याद किया, देन इसका मैंने वेब बनाया, इसके ये सिनोनिम्स होते हैं. फिर जब मैंने 30 days 40 days कंटिन्यूअसली रीड किया, देन मुझे समझ में आया कि यार वही 100 to 200 वर्ड्स होते हैं जिसके आसपास के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हमसे रेगुलरली आर्टिकल्स में हमको दिए जाते हैं. एंड बहुत बार
इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे एक इंस्टिंक्ट डेवलप होगा कि कोई भी वर्ड के मीनिंग को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर हम इस प्रैक्टिस में है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर बेस्ड क्वेश्चंस एंड वोकैबुलरी, ये सारा चीज विल बी एबल टू गेट इट। ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर में यू मस्ट बी वेरी गुड एट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक वर्ब्स, टेंसेस एंड एडजेक्टिव्स। यहाँ पे एक जो बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, स्पेशली इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स, हमको ऐसा लगता है कि भाई बीइंग फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, सही होगी, सो व्हाटएवर वी रीड जो पढ़ने में सही लग रहा है वो सही होगा। इस एटीट्यूड से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी गलती होती है, ठीक है। So you must go through the basic concepts of these 4 topics: subject verb agreement, verbs, tenses and adjectives, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ग्रामर में और बहुत सारे टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है। So this was everything about prelims, like developing your reading habit, how to read speed। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भाई एक अच्छे एस्पिरेंट की रीडिंग स्पीड मस्ट बी एनीवे अराउंड 300 to 400 वर्ड्स पर मिनट। तो ये रीडिंग स्पीड अचानक नहीं आएगी, बट रेगुलरली अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव इट इन 1 to 2 months, राइट। हाँ, एंड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं गाइस, डोंट प्रेज्यूम कि इतने ही अटेम्प्ट्स रखने हैं। प्रीलिम्स का पेपर सिंपल होता है बट कई शिफ्ट में हार्ड भी होता है। जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, जितना आपका कंफर्ट लिमिट है उतने क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, पेपर इजी आएगा तो भी ऐसा नहीं होगा कि हमने कम अटेम्प्ट किए हैं, पेपर टफ होगा तो ऐसा नहीं होगा कि हमने ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किए हैं। गॉट इट? Absolutely. Thank you, sir, for that answer. Okay, I'll come to some other queries that I could see here. So I think this is Mayur. Okay, so which books should be read for economy related articles? And we have, okay, we'll come to the next question after this. Yes. Yeah, Mayuki, I won't suggest any particular books because books हमेशा revised edition आते रहते हैं. If you want to go through the basic concepts, then Ramesh Singh is a good book. But I would suggest कि जो daily newspaper होता है, 2 ही newspaper मैं हमेशा अपने students को recommend करता हूँ, The Hindu, that too especially Delhi edition and Indian Express. ये 2 newspapers को if you follow it regularly, आपके language में overall development आपको देखने को मिलेगा. And regarding grammar and regarding vocabulary, the best book till date I have gone through is General Objective English by SP Bakshi. Yeah, it's a great book. Next query, please. Okay, so I think Mayuk, you got your answer, right? Okay, coming to another question from Arjun. Arjun is asking about, sir, what are the main topics that we need to study for English? Topics regarding grammar or? I think the overall topics he wanted to know. Okay, I think we can discuss about the main topics for grammar and comprehension as well. Okay, okay. Grammar also. Okay. Grammar. Yeah, Aditya, I mentioned it like 4 major topics: verbs, tenses, adjectives, and subject-verb agreement, right? And actually, more than the concepts, the point is how many questions do you practice, right? ग्रामर के साथ एक चीज होता है बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ, लाइक वर्ब्स का चैप्टर हम लेकर के बैठ गए एंड स्पॉटिंग द एरर, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, ये क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत बार क्योंकि हमने वर्ब्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो हम ट्राई करते हैं कि वर्ब्स ही ढूंढेंगे हम एरर में, राइट? तो वो हैबिट हो जाती है, वी नो कि भाई हाँ वर्ब्स में एरर होगा, जब मैं टेंसेस में जा रहा हूँ तो मुझे पता है टेंस में एरर होगा, एडजेक्टिव्स में एरर होगा। सो इस चारों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करने के बाद गो थ्रू द मिक्स क्वेश्चंस, जो आपके पास टेस्ट सीरीज होता है उसके मिक्स क्वेश्चंस पे जाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर एनालिसिस, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या And let's move to some more questions that I received during the registration also. So I'll quickly come to that question. Okay, we got a question. How can we improve our mental ability while we are preparing for the exam? Mental ability as such for reasoning, right? Yes, I think so. Yes. I think Rajat sir would be the better person जो आपको इस पे बताएंगे, जो रीजनिंग का सेशन ले रहे होंगे। Yes. Okay. I'll come to another question from Lokeshwar, and he's asking, what is the best way to improve score in
reading comprehension part of English? Lokesh, reading comprehension questions 2 से 3 वैरायटी के होते हैं. At least 20 to 30% questions will be simply vocab based. 20 to 30% questions will be inferential based, and rest जो होगा वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होगा. ठीक है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बहुत सारे वैरायटी होते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो रीड करा हुआ है उसको, एक हैबिट जैसे मैं यूज करता था, लाइक एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, एक पैराग्राफ को रीड करके एक सिंगल लाइन में उसकी समरी, 2 से 3 वर्ड्स में मैं उसकी समरी लिख लेता, फिर सेकंड पैराग्राफ पे जाता. एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता क्या है, जब हम पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड करने को बैठते हैं, सो जब हम शुरू से रीड करने आते हैं, रीड करते हुए आते हैं, तो थर्ड फोर्थ पे पहुंचते ये होता है कि हम फर्स्ट पैराग्राफ भूल जाते हैं. ये एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है सभी के साथ. तो एक ये टेक्निक आप ट्राई करके देख सकते हैं, 2 से 3 वर्ड में आप उस पैराग्राफ की समरी लिखिए. सेकंड थिंग, व्हेन यू रीड अ लॉट ऑफ वर्ड्स, तब आपके भूलने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं. बट धीरे धीरे जब आप रीड करेंगे, एक हैबिट आएगी आपके अंदर में, तो आप बहुत सारे वर्ड्स जो काम के नहीं उसको आप ओमिट कर लोगे. तो ये बट प्रैक्टिस आपको रीडिंग से ही आएगी. सपोज एक स्टेटमेंट है कि मिस्टर XYZ हु इज द ओनर ऑफ XYZ कंपनी, ये वो कॉमा हैज गिवन हिज अप्रूवल. तो ये हु इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी वाला जो लंबी चौड़ी लाइन थी, वो एक्चुअली उस सेंटेंस में कोई मतलब का ही नहीं था. सो यू हैव टू ओमिट दैट पार्ट. और ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी. ठीक है. सो आरसी एक तो ये तरीके हो गए कि हम स्पीड रीड कर सकते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं. एंड सेकंड, जैसे मैंने शुरू में बोला था, वो टॉपिक्स जिसके बारे में वी हैव सम नॉलेज, कुछ हमने सुना हुआ है, सीखा हुआ है, तो वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डेली आप जितने वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को आप रीड करें, उतना अच्छा आप आरसी में परफॉर्म कर पाएंगे. Right. Thank you, sir, for that answer. Okay. Coming to the next question. What mock test should I follow for exact exam level questions? Okay. Mock test, बहुत सारे स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट हैं. डेफिनेटली टू स्टार्ट विथ यू कैन गो थ्रू स्मार्ट किड, प्रैक्टिस मॉक, अच्छे मॉक्स हैं, अड्डा के अच्छे मॉक्स हैं. बट एक चीज आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका बेसिक्स कंप्लीट हो गया, यू आर इनटू योर प्रिपरेशन फॉर 4 to 5 months, बेसिक आपका लेवल ठीक है, then I would recommend कि go for olive board mock test, right? क्योंकि olive board के mock test का जो standard होता है वो exactly exam, in fact exam से एक level ऊपर ही होता है, right? I would definitely recommend कि olive board के practice mocks आप practice कर सकते हैं, but once you are good with your basics, तब उस पर जाना better रहेगा. Second thing, एक और point मैं यहाँ पर mention करना चाहूँगा. बहुत बार स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मेरा तो 100 में 70 स्कोर हो गया, 80 स्कोर हो गया, मैं ठीक परफॉर्म कर रहा हूँ. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स में जो चेक करने का होता है, दैट इज योर परसेंटाइल. कीप इन माइंड, ऑलवेज चेक योर परसेंटाइल. इफ योर परसेंटाइल इज अबव 90%, देन आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया होगा. ये पॉइंट मेरा बोलने का रीजन ये है, एट टाइम्स ऐसा होगा कि टफ मॉक्स में 100 में 30 स्कोर आ रहा है, तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे कि सर 30 स्कोर आ रहा है, मैं क्या कर पाऊंगा, मॉक स्कोर नहीं बढ़ रहा है. ऐसा नहीं. अगर उस 30 स्कोर में भी आपका परसेंटाइल 90 प्लस है, देन डेफिनेटली वो मॉक टेस्ट टफ था. एंड 90 परसेंटाइल ऊपर मतलब आपने बहुत लोगों से अच्छा परफॉर्म किया हुआ है. सो कीप इन माइंड, कंसिस्टेंटली अगर आप 90 परसेंटाइल प्लस स्कोर कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर इन द लिस्ट ऑफ रैंकर्स. अब वो स्कोर चाहे आउट ऑफ 110 हो, चाहे आउट ऑफ 190 हो. सो कीप दिस इन माइंड जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं. Okay. Let's come to some more questions. How to prepare prelims, IBPS, Bharti? I think we are already discussing that how you need to prepare for prelims. So you have to be in the entire session and keep listening, right? So I think Sarah has already mentioned few points. Just, once the video is there, you can just go back and understand. Okay. Coming to the next question for Archita. Archita is saying, what type of questions will be there, like writing or ticking? How do they understand the format of exams when they're going to sit for the exams? Sorry, didn't get I think Archita wants to know the format of the exams. Like, will they be writing answers or will they be ticking off the answers? And what type of questions will be there? Okay, Arpita, right? Archita. Archita, your whole question paper is MCQ based, right? So in prelims, you'll get 30 MCQ based questions from English section. In mains, again, you'll get 35 questions, MCQ based questions.
देन आपका एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का सेशन होता है जहां पर आपको लेटर या एसे राइटिंग का टास्क दिया जाए। एंटायर पेपर जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी बेस्ड ही होगा, वो भी एमसीक्यू पैटर्न। So I think you got your answer. Okay, coming to some more questions. Time management. I could see this question coming in, that how should we maintain time management in IBPS PO English exam? Okay, I guess अगर आप ठीक ठाक भी स्कोरर हैं, एवरेज परफॉर्मर भी हैं, इंग्लिश में 20 मिनट्स इज हेल लॉट ऑफ टाइम। 30 क्वेश्चंस 20 मिनट्स बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, राइट? सेम फॉर मेंस में भी 35 क्वेश्चंस 40 मिनट्स मिलता है। ठीक ठाक अगर हम एवरेज परफॉर्मर है तो वो भी टाइम बचता है। सो इंग्लिश सेक्शन में आपको टाइम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। स्टिल अगर ऐसा है, डाउट हो रहा है कि रीडिंग स्पीड कम है, तो आई वुड सजेस्ट कि बेटर गो फॉर द सेक्शन ऑफ क्लोज टेस्ट, द सेक्शन ऑफ पैराजंबल, ग्रामर। फिर आरसी को हम लास्ट के लिए रख सकते हैं अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारी रीडिंग स्पीड वीक है। देन Okay, Arjun is asking, is the time left for IBPS prelims enough for preparation? Start preparing now. Is it enough time for them to sit for the exams? तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सही आंसर दूं कि क्या बोलूं, आप लोग बताओ। So actually it's not enough time because this is a national level competition and the number of aspirants जो इस तरह के एग्जाम्स बैठते हैं, it's approximately 15 lakhs to 20 lakhs national level पे, right? So इसमें से भी जो 10 to 20% का क्राउड होता है वो वैसा क्राउड होता है जो पिछले 1 साल 2 साल से प्रिपेयर कर रहा होता है। So I won't say कि भाई बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल आराम से किया जा सकता है, बट या अपने परफॉर्मेंस को आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। अगर एग्जाम तक आप रेगुलरली मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसको एनालाइज करें, तो डेफिनेटली आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे बेटर ही आप परफॉर्म करें। Okay, coming to another very straight questions that they have asked is like, how many attempts, sir, this is required for to crack this exam? I mean, can they crack this exam in very first attempt, or how many attempts they can take? Okay, if I say about my students, so more than 50% स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, मैक्सिमम लोगों ने सेकंड अटेम्प्ट पे क्रैक किया, सेकंड टू थर्ड अटेम्प्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स, या बट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक करने वाले जो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, 20% 30% लोग होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी उसको क्रैक कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि मैं हमेशा ये जब बात बोलता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक्चुअली किसी भी एग्जाम का एक थ्रेशोल्ड होता है गाइस। कुछ चीजें आपने करके रखी होनी पड़ती है तभी आपसे वो एग्जाम क्रैक होता है। अब वो जो चीजें हैं, आप हो सकता है आपने स्कूल में प्रिपेयर कर लिया हो, आपने ग्रेजुएशन में प्रिपेयर कर लिया हो, ग्रेजुएशन के 1 साल बाद आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया और तुरंत आपने क्रैक कर लिया, एंड वो थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत बार स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन होने के बाद उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सो द पॉइंट इज वो थ्रेशोल्ड को आप कब अचीव कर रहे हैं, राइट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं हो सकता, यस करने वाले हैं, एंड मैक्सिमम मैंने देखा है कि 2 to 3 अटेम्प्ट्स में बच्चे क्रैक करते हैं इसको। All right. And if we talk about the minimum educational qualification that you need to sit for this exam, Definitely graduation for all these banking exams. You must be a graduate. and of course the salary, which they do want to know, like if they're sitting for this exam, they're preparing for this exam, what is the salary that they can expect and the post that they expect? So how do they go about it? All right. For a probationary officer, salary anyway it lies around 52 to 55,000, depending on your city. If you go to tier A cities, वहाँ पे allowances ज़्यादा रहते हैं, तो it might touch around 58 to 60, and tier 2 to 3 cities में वो 50 से 55 के बीच ही होगा 1000। Think that was a practical question that I'm sure they do want to know, that yes, if you are sitting and preparing for the exam, are we getting enough time? Okay. Coming to another question that I saw here is about the vocabulary part. Like if they have to improve their vocabulary, what all tips and tricks they can use, and also how they can prepare for reading comprehension. So let me take vocab part firstly. So guys, बहुत बार your college teachers must have told you there is a good book that is Word Power Made Easy by Norman Lewis, right? So इस book को prepare करने का एक तरीका होता है, like they'll give some root words, उन root words से वो कुछ words बनाएंगे,
उन वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे एंड फिल इन द सॉरी मैच द फॉलोइंग पैटर्न में वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, राइट? So in each and every session there are around 15 to 20 words जो आप सीख सकते हैं, एंड उस बुक में अप्रोक्सीमेटली 40 सेशंस एंड इनफैक्ट उसको याद करना, उसको प्रैक्टिस करना बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, बहुत जल्दी आप वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लोगे एंड ये 40 सेशंस आप प्रैक्टिस करने पर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप यस वोकैबुलरी को किस तरीके से याद करना है वो आप सीख चुके होंगे, राइट? सेकंड थिंग, बट फ्रैंकली स्पीकिंग IBPS एग्जाम्स में जैसा आपने उस वोकैब वर्ड को याद किया हुआ वैसे वर्ड्स आपको एग्जाम में मिले ऐसा बिल्कुल नहीं, राइट? सो इसके लिए जैसा मैंने बोला कि ऑलवेज रीडिंग हेल्प्स यू। रीडिंग से आप बहुत सारे स्किल डेवलप कर सकते हैं। यू विल गेट टू नो कि कॉन्टेक्स्ट कैसा जा रहा है, वह वोकैब्स आपने प्रैक्टिस किया हुआ, पॉजिटिव साउंडिंग वर्ड्स कौन से लग रहे हैं, नेगेटिव साउंडिंग वर्ड्स कौन से लग रहे हैं, like the words which have prefix of in dis, ये आपको बेसिकली पता है कि नेगेटिव वर्ड्स है, तो आप उसको भी मैच कर सकते हैं कि भाई उसको भी आप मैच कर सकते हैं कि वो नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट वाले सेंटेंस में हम इसको यूज करेंगे। देन जैसा कि मैंने बोला रेगुलरली जब आप आर्टिकल्स रीड कर रहे हो उसके वर्ड्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदू की वोकैब लिस्ट बहुत सारी जगह होती है तो उससे भी काफी हद तक आप वोकैब को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, आपने एक बार बेसिक्स अपना एक बार एक अच्छे स्टैंडर्ड पे पहुंच गए, देन सबसे हेल्पफुल होता है कैट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट? कैट लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के आरसीज होते हैं, आरसीज का अलग अलग वैरायटी, अलग अलग पैटर्न होता है, वो अगर आप धीरे धीरे सॉल्व करने की प्रैक्टिस लाते हैं तो डेफिनेटली वो मेंस में आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा, राइट? All right, and coming to another question from Aditya, I think, how to motivate myself for studying long hours? आदित्य, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अपने आप को इंटेंसली कोर्स में डालते हैं, राइट? आई वुड सजेस्ट कि ऐसा होता है कि 2 से 3 दिन नया नया हमने प्रिपरेशन चालू किया है, सर 8 घंटे 10 घंटे हम बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर आपने 2 दिन 3 दिन पढ़ा ही नहीं, ये एक्चुअली आपके लिए काम नहीं करेगा। You only sit for 5 to 6 hours, but this must be consistent. कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, रेगुलरली 5 to 6 आवर्स कंसिस्टेंटली आपको बैठना पड़ेगा, राइट? एंड मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे मैं करता था भाई, जिस जॉब में भी जिस फील्ड में भी आपको जाना है, जस्ट गो थ्रू द वीडियोस, जस्ट इमेजिन करो दैट यू आर द चेयरपर्सन जो इंडिया को एड्रेस कर रहा है, इस तरह के वीडियोस देखो, डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा आपको। एंड सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट जॉब है तो आपको पता है आज की डेट में अगर आप लोग सब एक यंग एज में हो, ग्रेजुएट हो, तो शादी भी करनी है, तो बहुत सारे लड़के उस तरीके कोई मोटिवेशन बना सकते हैं, राइट? सो व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट, या Okay. All right, I think Aditya, that those words by sir will really motivate you now to work ahead, right? Okay, coming up to next question from Ashwini. For a day, how many minimum hours should I prepare, and how do we have a proper, study plan for a single day, and we, like work on that? Ashwini, right? The one who asked question, yeah. Ashwini, as I said, कि 5 to 6 hours consistently, it's a good numbers. And जब आप एग्जाम्स के पास होते हैं, ये आप इंटेंसिटी आपको इसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम के पास जब हम होते हैं तो हमको एक स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि हमने जितने भी मॉक्स दिए हुए उसको दोबारा हमको एनालाइज करना होता है। सारे सेक्शंस पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है कि या इंग्लिश में मेरा ये वीक एरिया है, क्वांट्स में इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन में मैं हमेशा गलती करता हूँ, रीजनिंग में ये गलती होती है, करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करना है। सो एग्जाम के पास आते आते आई वुड सजेस्ट कि भाई आपकी जो स्टडी आवर्स होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 आवर्स की होनी चाहिए, राइट? ये इतना मिनिमम आपका एग्जाम के आसपास, लाइक 2 to 3 months प्रायर टू एग्जाम, ये आपकी होनी चाहिए इतनी से। Okay, and coming to next question, Bindu, we're already discussing about how to prepare for mains in English. I think the whole session is dedicated to, English. So just be with us on the session. But if you have any particular question for English, then definitely you can throw it here, right? Okay. Archita is asking, we can study and attend this exam in our graduation period. I think sir has mentioned that you can start preparing, but you can only sit for this exam after you have done your UG. Okay, after you have done your graduation, then only you're eligible to sit for this exams. But preparation, I think, sir, anytime they can start off.
anytime, yeah. Okay, बस okay. अगर आप 12th में स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड definitely suggest go for the exams like RBI assistant, RBI grade because you have that much time, आपके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम रहेगा एंड डेफिनेटली अगर आप इतना टाइम अगर दे रहे हो तो आपको आरबीआई जैसे एग्जाम्स के लिए ही जाना चाहिए. Right. Okay, another question. I don't see your name. So he says, does IBPS clerk and IBPS PO English have same level of difficulty? डेफिनेटली नो, डेफिनेटली आईबीपीएस क्लरिकल पैटर्न ऑफ जो इंग्लिश का जो पैटर्न होता है वो अगर मैं 100 उसका स्केल रखूं तो आईबीपीएस क्लरिकल का जो स्टैंडर्ड है वो अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 होता है एंड जो पीओ का होता है वो मोस्टली 90-100 ही होता है. सो इतना बड़ा एक वास्ट डिफरेंस होता है. So, sir, like comparing these two, which is like the better one, should they go for? The PO definitely is the better one. Definitely PO is the better one. Actually, clerical cadre की कोई अलग से preparation नहीं होती guys. You will always try for PO only. You always go for mains only. जैसा मैंने बोला prelims की अलग से कोई preparation नहीं होती and clerical cadre की कोई अलग से preparation नहीं होती. Coming to another question from Pinky. Okay, Pinky is saying, sir, I have just passed class 12. I want to prepare for this job. Can I qualify after 3 years? I am a below average student. That I guess I have mentioned कि आप anytime you can start with your preparation. Pinky, you have a good amount of time to start on your basics, to work on your basics, right? At times बहुत सारे students, specifically I must say कि commerce background वाले students होते हैं, they don't focus on mathematics, right? So you have ample amount of time कि आप अपने maths and reasoning के basic concepts पे काम करें. And definitely अगर आप अभी से अपने reading habit पे inculcate करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा productive होने वाला है आपका ये वाला time. Okay, Aditya is saying, sir, bank private हो रहे हैं, issue jobs पर कुछ impact पड़ेगा after selecting? आदित्य, बहुत सारे ऐसे मिसक्रिएंट्स होते हैं जो तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया में लाते हैं. सोशल मीडिया के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. ऐसे लोग बैंक प्राइवेटाइजेशन, जॉब्स चली जाएंगी, जॉब्स बहुत हद तक कम हो जाएंगी, तैयारी छोड़ दीजिए, ये सारी चीजें एक एस्पिरेंट को ध्यान में नहीं, बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है. आपको सिर्फ अपने जॉब पे फोकस करना है. आपको पता है कितने पोस्ट आ रहे हैं, कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, आपको पता है कितने मार्क्स लाने. प्लीज फोकस ऑन दीज थिंग्स ओनली. बहुत बार स्टूडेंट्स अपना आधे से ज्यादा समय इस तरह के फालतू वीडियोस में टाइम वेस्ट करते हैं. बहुत बार मैंने स्टूडेंट को देखा है कि सर स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए इसके वीडियो देख रहा हूँ. मैंने बोला ठीक है यार, फिर स्ट्रैटेजी बनाओ फिर अपनी. नहीं सर 10 वीडियो और देखूंगा. इसमें उसने अपना सारा समय खराब कर लिया, वो 10 स्ट्रैटेजी वीडियोस पे ही रह गया. सो या एक दो वीडियोस आप देखिए बट इस तरह के न्यूज से दूर रहिए क्योंकि ये सिर्फ आपको डिमोटिवेट करेगा. आप पढ़ने बैठोगे, फोकस होकर पढ़ोगे, फिर लगेगा यार प्राइवेटाइज हो गया तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गई तो क्या करेंगे, कल को हम प्राइवेट जॉब पे चले क्या. जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम्स. Absolutely, I agree to that. Okay, another question, difference of FAD, SDA and IBPS exams. What's the difference between Sorry, them? what's the question? I didn't Difference between FAD, SDA and IBPS exam. What is FAD? Bharti, I think you have asked this question. I would request if you like elaborate a bit more on this question, please. Okay, I'll quickly move to the next one. Now I'm studying in degree. Why I can't attempt this exam? I think sir has mentioned this numerous time that you can sit for the exams only after you have completed your graduation degree. Okay, you can start preparing right after 12, but you cannot sit for this exam before your undergraduation. Okay, that's a thing, that's a rule which comes with this exam, so you will have to understand on this point. Okay. Okay, I'll come to the next question that I saw here. So someone has asked that I'm very bad at English. How can I improve my marks? I have done my graduation with 69%. इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बहुत बार आपने सुना होगा लाइक नॉवेल्स रीड करना, न्यूज़पेपर रीड करना, इंग्लिश मूवीज देखना. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. प्रैक्टिस एज इन जैसे डेली यूसेजेस होते हैं. सबसे पहले बिल्कुल अपने आप से स्टार्ट करिए. इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्म करना स्टार्ट करिए. लाइक अपने बारे में अगर 5 सेंटेंस बोलना है तो हम क्या कुछ चीजें बोलेंगे, यहां से आप अपने इंग्लिश को स्टार्ट करिए. ठीक है. और बेसिक बुक्स पढ़िए, ग्रामर की बुक सीधे मत जाइए.
वही चीजें रीड करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, लाइक कोई स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, इसके जो बेसिक आर्टिकल्स होते हैं इसको पहले रीड करना स्टार्ट करिए। सीधे हमने एग्जाम की तैयारी के हिसाब से ग्रामर बुक स्टार्ट कर लिया, बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया, सीधे द हिंदू पकड़ लिया, स्टार्ट विद योर बेसिक्स। सबसे पहले रीडिंग हैबिट अपने अंदर डालिए। आई वोंट सजेस्ट कि सीधे सीधे आप इंग्लिश रीड करिए, रीडिंग हैबिट डालिए, हिंदी में पढ़िए। हाँ भाई, क्रिकेट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज मुझे बहुत अच्छा लगता है, हिंदी में मैं न्यूज पढ़ रहा हूँ, राइट। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। कोई बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाने बोले तो हम गड़बड़ करते हैं, वो सेंटेंस हिंदी में भी बनाने बोले तो भी गड़बड़ होती है। सो द बिगेस्ट पॉइंट इज कि पहले सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है उसको हम सीखें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, राइट। Absolutely. Okay. Which exam can I attend at my degree period, ma'am? So I think the student wants to know that if he's like undergoing his undergraduation degree, so what other exams can he like? एक ही एग्जाम मेरे ध्यान में आता है, अगर मैं नेशनल लेवल एग्जाम की बात करूं तो दैट इज एसएससी सीएचएसएल, दैट इज 10+2 बेस्ड, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू अगर आप अभी अपीयर कर रहे हैं ग्रेजुएशन। Right, absolutely. Okay. Bindu is saying I'm bad at grammar. How can I improve grammar? Okay. आई थिंक फिर से वही पॉइंट है कि Yes, we have, I think, discussed about this, right? So, Bindu, I would request let's not like repeat the same thing. I think Sir has already discussed like for everything, each and everything is already mentioned, right? Sir, when we talk about there's an interview section, I think that happens after the exam. So, if you can like brief a bit about that part also. वेदर थोड़ा सा खराब चल रहा है, सो माइट बी अगर वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर व्हाट वरी। Sure. सो इंटरव्यूज की हम बात करें तो गाइस, इंटरव्यू इट्स ऑल अबाउट योर ओपिनियन। बहुत बार जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, they just go through the facts like BSNL को रिवाइवल पैकेज दिया गया, 1.64 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, तो उनको लगता है कि इंटरव्यू उनसे यही पूछेगा। इंटरव्यूअर ये नहीं पूछेगा आपसे, इंटरव्यू ही नो कि भाई आपने ये पढ़ा है तभी आपने मेंस क्रैक किया। ही विल आस्क कि व्हाट डू यू थिंक अगर गवर्नमेंट ने रिवाइवल पैकेज दिया है तो उसका इंपैक्ट बीएसएनएल पे क्या पड़ेगा, एक्सचेकर पे उसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, क्या ये सही है और रॉन्ग है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। दिस ऑल थिंग डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियन, राइट। तो ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स बहुत टेंस होते हैं कि पता नहीं मैंने आंसर नहीं दिया तो मेरा क्या होगा। इंटरव्यूअर को आपके आंसर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। द पर्सन हु इज सिटिंग देयर, ही जस्ट वांट्स टू नो कि आप कैसे हैं, आप में ग्रास्पिंग पावर कैसा है, एज अ पर्सन, एज अ लीडर, बैंक का जो सिचुएशन होता है उससे आप अपने आप को एक्लेमेटाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इन्हीं के रिगार्डिंग उनके क्वेश्चंस रिवॉल्व करते हैं, राइट। बहुत ज्यादा नॉलेज होना, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नॉलेज होना, बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट। एंड ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी तभी आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ऐसा भी बिल्कुल, राइट। जिस लैंग्वेज में यू आर कंफर्टेबल आप इंटरव्यू उसमें दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay, and I think someone was raising hand, so probably Samiksha, you can drop your query in the chat, okay? Okay, so Aditya is saying in graduation my marks is less than 60%, but in PG I scored 60 plus. So am I eligible for RBI grade B exam? आदित्य, आई थिंक आप शायद एलिजिबल नहीं होंगे आरबीआई ग्रेड बी में, मिनिमम परसेंटेज है, बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर, एक बार उसको चेक करना पड़ेगा। Okay, and Ashwini is asking about registration for the banking exams. When will the registrations start? Ashwini, for that, I can share the page link and you can just keep it updated because the answers are there. So I'm just sharing in the group, it's chat itself, right? So everyone can have that. So regarding all dates and notifications, you can just go back to this link and, have a look on all these exams. Also, so like before we like move toward the wrap up of the session, last year about 2021 exam, if you can have a brief, a very short analysis, like how was the exam, so that the upcoming ones can have a bit of idea about, how the exam went and what all they can expect. लास्ट ईयर 2021 का पैटर्न अगर देखा जाए वही कन्वेंशनल पैटर्न था,
You got questions of reading comprehension, close test, parageneral, grammar based पे questions थोड़े से ज्यादा थे, sentence correction, sentence improvement, error detection, ये सारा grammar का part होता है, right? So approximately 20 to 25 number of questions was a good attempt, अच्छा attempt था. इंग्लिश का जो सेक्शनल कट ऑफ था इट वाज 10, बट आपको पता है कि ओवरऑल कट ऑफ में हम रुक जाएंगे अगर हम 10 मार्क्स को अगर हम टारगेट करेंगे, राइट? तो 20 से 25 एक अच्छा नंबर ऑफ अटेम्प्ट था. आपके जो आरसीज पूछे गए थे एग्जाम में काफी बेसिक सिंपल सोशल इशू पे आरसीज थे, ठीक है. मेंस की अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेटली 18 टू 22 क्वेश्चंस, इट वाज गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है. मेंस में जो आपका इंग्लिश का स्कोर होता है वो जो कट ऑफ स्कोर था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 10, but as you know कि 18-20 में भी you have to score at least we have to target 18 plus अगर हमको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ठीक है. एंड जो टॉपिक्स पूछे गए थे मेंस में, ग्रामर का वेटेज अगेन थोड़ा सा कम था एज कंपेयर टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस. एंड मेंस में सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पूरा पैसेज नहीं होता, आपको शॉर्ट आरसीज भी दिए जाते हैं, आपको कंक्लूजन थीम बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं. तो ये सब जगहों पे आपका रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछा गया था. एंड जैसा मैंने बोला आउट ऑफ 35, 18 टू 22-24 वाज वेरी गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. Okay, I could see another question. Archita is saying that sir said one exam name that in our graduation time we can attend. Can you please repeat that? Yeah, that's SSC CHSL, combined higher secondary level. Archita, that's clear for you, right? Okay. Abhishek is saying I have heard that limitation on attempts has been removed. Can you please confirm on that? Abhishek, as such, are you mentioning like minimum 40% marks आपके मेंस में होने चाहिए, then only आपका phase 3 चेक किया जाएगा, ऐसा है क्या? वही क्वेश्चन पूछ रहे हो? I think attempts, he's asking like how many attempts. There was a limitation on attempts. Okay, I have heard that limitation on attempts on giving exam has been removed for general category. Yes. उसमें as such limitation अभी कुछ भी नहीं आ रही है. Abhishek, आपका age limit 30 है. You can state right from 22 after your graduation, like 21, 22. Okay, and before we like move towards our feedback poll, I have shared 2 links. We'll be having 2 more sessions for reasoning and maths with 4D Education Hub. So you just need to register free on these links. Probably next week we'll be having reasoning, and after that we'll be having maths. So you can just go back and just register. And if you have missed out today's session, this video post editing will be there on our YouTube channel. So if you have missed any point for English, or if you feel like to listen to the whole video again, you can always come back to our channel. I'll be sharing mail with the YouTube link as well. So I'm just launching the poll, and while you are filling up the feedback poll, I'll just have a last few point discussion before we wrap up the session. So I hope the session till now was useful. I think sir has answered very well to all your queries, each and everything that you wanted to know. And if you feel like to connect with him, I can share his LinkedIn profile link. You can connect with sir on LinkedIn. And if you like to, enroll about his institute, you can always do that. So you just need to connect with him and, get hold of the discussion and, get in touch with him, and probably he can guide you in the best possible way, right, sir? So I've just shared your LinkedIn profile. So you can connect with Shreyas, sir, on LinkedIn, and probably he can guide you there, right? So I hope this session till now was useful. I think sir did answer all your queries. He was extremely helpful in all his answers. And I think all of you got your answers on, post apart from IBPS also. I think there were some exams that you wanted to know. So I think we did answer on that. So while you're quickly filling up the form, just last few more advices I would like to take from sir is that, so like any quick tips you would like to give them before they sit for the prelims and mains, and like for the exam day particularly, if you would like to share something. Definitely. Actually, all the sections if you go through, like points में अगर आपको ठीक ठाक perform करना है, अगर हमने basics पे काम नहीं किया, then 2 से 3 topics you must be good at, like you practice quadratic equations, you practice simplification and DI, right? ये 3 topics अगर आप करते हैं तो आप ठीक अच्छा perform कर लेंगे, right?
सेम विद द रीजनिंग सेक्शन में आपको पता है बेसिक्स ऑफ पजल्स के जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल. And for English section, as I told you, 4 major topics related to grammar. इसके जितने भी questions हो सकते हैं उसको practice करिए. And yeah, go through some regular जो recently जो issues हुए हैं उस पर articles, कुछ एक दो articles अगर आप read करोगे तो वो आपको prelims में definitely helpful रहेगा. Sorry, okay. Apart from English, like for other two subjects also, would you like to recommend something that they should like keep in mind as a like in general? Of course, we'll have sessions for them, but in general, would you like to recommend something to them? Like that point only I mentioned, like in mathematics section you don't need to go through all the sections of elementary mathematics, right? So 3 से 4 topics अगर आप focus करते हैं तो definitely आपके लिए exam में helpful रहेगा. Quants में अगर हम बात करें तो आपके जो caselets होते हैं, puzzles होते हैं, arrangements हो गया, puzzle हो गया, and आपका या सिलॉग्स, वेन डायग्राम वाले ये बेसिक को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग काफी सिंपल होता है, तो इतने 4-5 टॉपिक्स को अगर आप रेगुलर से प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. Okay, and even if you have some more queries, if you want some answers for that, so for that I'm sharing this link where you can put your queries anytime, and I would request our experts, you know, to answer them back for you. So what you need to do is you can just put your queries there and you'll definitely get answers from experts on this particular page. Okay, so please just go through this link, have a look, post your doubt or query. If something is left or if you forget something and you want to know, you can just post your query there and probably we can have you know, experts all around to answer that, right? So I think we that's a wrap up for this session today. We had a lot of information exchanged and I think we have a lot of queries coming up here and there. So thank you so much, sir, for taking out your valuable time and, you know, answering all their queries, all the small questions that they have, and, boosting up to sit for the exams and how they can sit for them, how they can prepare. Definitely, we'll try and come up with more such sessions for Sarkari exams. Of course, in our country, it's very important. Sarkari exams are considered very, very important. So definitely, and I've also shared his LinkedIn profile. You can like reach out to him, and definitely he's there to guide you. So thank you so much, sir. Thank you. All the very best to everyone. Do give your best. Please be focused on your exams. Yeah. Absolutely. Thank you so much, everyone, for joining us on this session. Do register for our 2 more sessions with 4D Education Hub for reasoning and maths, and I will definitely see you across on those sessions. Thank you so much and have a great evening. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel.